जो है कि बजट के अराउंड इतना कंफ्यूजन रहा है, जो हाल ही में रणबीर कपूर से किसी ने इंटरव्यू में पूछा भी आफ्टर द फिल्म कि ये 410 या 450 करोड़ का बजट रिपोर्ट करा जा रहा है, और उन्होंने कहा कि इस फिल्म का जो बजट है वो सिर्फ इस फिल्म तक सीमित नहीं है, वो इट्स ऑल्सो गोइंग फॉर द सेकेंड पार्ट एंड द थर्ड पार्ट की एक तरीके से इट्स एन इन्वेस्टमेंट. सो जतिंदर, आप की जो नॉलेज है, how what do you feel, really, how, if you have to explain the budget of Brahmastra, what would you tell us? Brahmastra, we didn't get any official number as budget from Dharma or Star Studios, but the accepted figure in trade is around 375 to 400 crore rupees. Now, this Okay. 400 crore number includes the delay cost. Basically, the film is in production from 2015. So, if you spend like 100 rupees in 2015, it is not equal to 100 today. Hmm. That for 7 year difference make that 100 rupees 150 today. So that number isn't actually 400 crore. It is due to the delays that the number has reached to 400 crore. And Hmm. the other thing is that like Ranbir Kapoor is not actually paid for the film. The rumors in the trade are that he isn't actually taking the money for the film as the fees, but will be participant in the profit of the film. But for Hmm. the purpose of trade, we have to put a value for his remuneration. So maybe 50 crore or 60 crore. That 50, 60 crore isn't paid to Ranveer, but is counted in this 400 crore rupees. I get And it. that what you call Ranveer said the numbers will be apportioned in the other two parts. That component of cost is basically one, it's the delay cost, which for the 7 8 years the film has been delayed. That's why the budget has ballooned by maybe 50 to 100 crore rupees, and that 50 to 100 crore rupee will be apportioned in these three films, Oh, and okay. some part of pre-production will be apportioned. So the approximate, if you have to give a fair value, the budget may come around 300 to 350 crore rupees for this film. मतलब अगर सब कुछ डिले कॉस्ट वगैरह को हटाया जाए और तो जितना इस फिल्म में हमें डालना है उतना डाल के 300 से 350 के बीच बीच में बजट हो सकता है. ओके, ओके, ओके. तो उस बजट के सामने अभी तक की कलेक्शन है. मैं पूछूंगी आपसे बाद में कि लाइफ टाइम आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पर अभी की कलेक्शन अगर हम देखें, आपने कहा था 213 करोड़ नेट, ऑल लैंग्वेजेस, एंड जितना हमने देखा कि ब्रह्मास्त्र की पूरी टीम ने बहुत कोशिश करी कि साउथ को इम्प्रेस करा जाए प्री रिलीज, एंड आई थिंक वो मेहनत काम भी आई है, क्योंकि 22 करोड़ काफी अच्छे नंबर है. तो 213 करोड़ नेट इन फ्रंट ऑफ लेट्स से अ बजट ऑफ 300 टू 350, कैसा, व्हाट इज द कंपैरिजन, हाउ डज बजट के सामने ब्रह्मास्त्र का कलेक्शन कैसे फेयर कर रहा है आपकी नजर में? जैसे मैंने अभी बोला कि 213 अभी फिल्म ने इंडिया में किया, वो नेट नंबर है. हम्म. ऑल ऑफ दैट इज नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस. तो अभी क्या है कि मतलब अभी जो फिल्म ने 213 करोड़ रुपए किए हैं, वो पूरे का पूरा स्टार या धर्मा को नहीं जाएगा. उसमें से अप्रोक्सीमेटली हाफ विल बी गोइंग टू द सिनेमा ओनर्स एंड हाफ इज गोइंग टू धर्मा or Star ओके. Studios. So the expected number in India is around 125 crore rupees from the theaters, from the theatrical revenue, and another 50 crore rupees is expected to come from overseas. ये जो नंबर आप बोल रहे हो, ये है जो प्रोडक्शन हाउस को जितना फिल्म जाएगा? ने किया उसका हाफ, अप्रोक्सीमेटली हाफ. ओके, वो जाएगा धर्मा और स्टार को? Yeah. ओके. So that will be totaling to around 175 to 180 crore when the actual number comes. सो ये जो आप बोल रहे हो 100 कितना बोल रहे थे आप? 125? 175 to 180 हाँ, 175 टू worldwide. 180 वर्ल्ड वाइड. इतना धर्मा और स्टार को हम मान कर चल सकते हैं अप्रोक्सीमेटली मिल सकता है Yeah, ऑन yeah. द बेसिस ऑफ जो अभी कलेक्शंस हैं, राइट? या नो मतलब जितना अभी हो गया और जो जो एक्सपेक्टेड नंबर है अभी आने वाले जो दिनों लाइफ में, टाइम, अच्छा, लाइफ टाइम ओके, नंबर. ओके. तो कैसा है ये 175 टू 180 का? विल दिस बी अ प्रॉफिट फॉर देम? Only basis of on the basis of theatrical, it won't be profitable for them.
but including those other revenue streams like OTT, satellite, digital, music, the film will be just about break even for them. Maybe it will be making some money, but the actual money making will be done in the Brahmastra Part 2 and 3. If Hmm. if Dharma announces Brahmastra 2, you can assume that the film is a success for them. If it wasn't, they wouldn't be doing this. The True. approximately recovery from the all revenue streams will be around 400 crore rupees for Brahmastra, and that is a big number. There will be maybe Hmm. five or six films in a Hindi film industry which have these kind of recovery. So obviously, Dharma and Star will be going for the sequel because this time the budget was increased because of those delays, 7 8 year delayed which this film had, and you can't expect for the second and third part to have that kind of delay. If it is to be going to be that, the sequel will be releasing in maybe 2040. We can't expect that, and the hope will be that the Brahmastra third part will be releasing by 2026 or 2027, and the Hmm. budget for those films will be maybe 250 300. And if they get this kind of recovery, 400 crore or 500 crore, whatever the case will be, they will be profitable in the long run. Hmm. So true, so true. And I think this also brings me to this question कि ये जो आपने इतनी अच्छी बात बोली है कि अगर पार्ट वन सक्सेसफुल नहीं होता तो Hmm. पार्ट टू वो नहीं बनाते क्योंकि कोई भी अनसक्सेसफुल वेंचर को आगे लेके नहीं जाएगा तो इस समय क्या हम ये बोल सकते हैं कि ब्रह्मास्त्र हिट है? Yeah, if you simply look at the box office collection, it is a box office hit for me. If a हम्म. film is doing 1 crore plus footfalls in India, 1 crore footfall is a quite big number. For me, हम्म. that is a box office hit. And if we look at the purely economics, it is going to be about break even for them, maybe give them some profit in long run. So I can confidently say that this is a hit for Dharma or Star Studios. तो जब आप ब्रेक इवन बोल रहे हो तो आप बोल रहे हो कि मे बी इट विल अर्न क्लोज टू 300 लाइफ टाइम. Hmm, in that box office number. हाँ. No, box office, I'm expecting it to doing like 240, 250 crore, and half of that will be like 125 crore rupees. हम्म. I'm saying break even, including those non-theatrical revenue like OTT and satellite, etc. They will be ओके. covering the and that 350, 400 crore which we mentioned earlier. ओके, सो 240 250 लाइफ टाइम नेट अगर बोले दिस विल बी इंक्लूडिंग ऑल द वर्जन्स, राइट? This will be, I think, yeah, you can say all the versions will be 250 crore approximately. तो 250 करोड़ लाइफ टाइम आप बोल रहे हैं कि यू आर एक्सपेक्टिंग इट टू डू एंड 250 यू थिंक इज गुड इनफ टू कॉल अ फिल्म लाइक दिस अ हिट. तो बात ये समझ में आती है मुझे कि अक्सर जो हिट्स नहीं भी होती प्रोड्यूसर्स फिर भी प्रॉफिट कमा सकते हैं क्योंकि थिएट्रिकल बिजनेस के आगे भी जो दूसरे एवेन्यूज होते हैं उससे पैसा आ जाता है, करेक्ट? Yeah, this was a case in like 2017, 2019. In this period, no one was basically losing anything from the film. The OTT revenue was so high that every film was complete recovering their budget from just the OTT rights. If you look at Jab Harry Met Sejal from Shah Rukh Khan, it was a हम्म. huge box office disaster. At the box office, it was a huge disaster. It barely did 60 crore net, but the whole budget was recovered from just the OTT, right? And for Shah Rukh Khan and Red Chillies, it was a huge profit venture. तो जब आप फुटफॉल्स की बात कर रहे थे जितेंद्र, आपने कहा 1 करोड़ प्लस फुटफॉल्स, विच इज ऑफ कोर्स साउंड्स लाइक अ ह्यूज नंबर. क्या ये नंबर को हम कुछ कंपेयर कर सकते हैं और किसी रिलीजेस से जो इस साल हुए हैं, बड़े रिलीजेस से जो और जो भी हिट फिल्में हैं उनके उनके फुटफॉल्स अगर आपको पता है कि उनके कितने थे और ब्रह्मास्त्र के को अगर हमें कंपेयर करना है? Yeah, sure. If we are going to expect like Brahmastra is going to do 250 crore in its Hindi version, the footfalls for it will be around 1.3 to 1.4 crore footfalls for it will be having.
1 crore 40 lakh, approximately that range. And these numbers are similar to, if we compare with pre-pandemic, these numbers will be similar to Salman Khan's Bharat, and the other films will be like Dilwale from Shah Rukh and Jai Ho from Salman. And if you they will be more similar to a Adil Mushkil of no, it will be little more higher than Adil Mushkil of Ranbir Kapoor, which was a hit also. This year it will be slightly higher or maybe a bit under from Bhool Bhulaiya 2, which Okay. did around 180 crore rupees. And for the Hindi version, it will be slightly less than RRR. ओके, भूल भुलैया से ज्यादा बोलेंगे फुटफॉल्स या कम माने जाएगा कंपेयर करें तो? It will be close enough for like too close to call right now, but I think it will be a bit higher. If you include Tamil Telugu, it will be easily higher. तो भूल भुलैया 2 का फुटफॉल्स कितने थे अराउंड Hmm, अप्रोक्सीमेटली? भूल भुलैया का अराउंड 1.3 की रेंज में है, 1.3 1.4.